segment of equivalent weight, let us now study how to find out the equivalent weight of bases. You know the formula. Equivalent weight of a base is the molar mass of the base upon number of replaceable OH minus ions. ये इसका n factor है. Let's see an example. Example number 1. Let's find out equivalent weight of caustic soda. Caustic soda means NaOH. What will be the equivalent weight? The molecular weight of NaOH is 40. Atomic weight of sodium is 23. Oxygen is 16. Hydrogen is 1. So the total molecular weight of sodium hydroxide, which is famously called as caustic soda, is 40. The number of replaceable OH minus ions is only 1. So that is why the equivalent weight of NaOH is 40. Correct? So therefore what I can say is that the equivalent weight, I am writing the short form, equivalent weight of NaOH is 40. What does that also mean? One equivalent of NaOH is also 40. It is one and the same thing. But when I write 1 gram equivalent of NaOH, then it should be 40 grams. Let's see example number 2. Let's find out equivalent weight of caustic potash. Caustic potash is famous name of KOH, that is potassium hydroxide. Equivalent weight, the molecular weight of this, atomic weight of oxygen is 16, correct? Hydrogen is 1 and this is 39. 39 plus 1, 40 plus 16 is 56. Upon number of replaceable OH minus ions is 1. So this is 56. Therefore what I can say is equivalent weight of KOH, which is nothing but one equivalent of KOH, is 56. Therefore 1 gram equivalent of KOH should be 56 grams. Third example, let us say equivalent weight of ammonium hydroxide. The formula for ammonium hydroxide is NH4OH. So what should be the equivalent weight? Molecular weight of NH4OH upon number of replaceable OH minus ions. Now what is the molecular weight? Here, this is atomic mass is 14, oxygen is 16. So the total is 30 plus 5 hydrogens is 35. Upon number of replaceable OH minus ions, again 1. So equivalent weight of NH4OH is 35. That means 1 equivalent of NH4OH is 35. That means 1 gram equivalent of NH4OH is 35 grams. Let's see example number 4, that of calcium hydroxide. What is the formula? It is CaOH twice. Therefore, what should be the equivalent weight? Molecular weight. 16 plus 1, 17. 17 to the 34 plus 40. So that makes it 74. But the number of replaceable OH minus ions is 2 here. So your answer is 37. Therefore, equivalent weight of CaOH twice is 37. That is 1 equivalent of CaOH twice is 37. And 1 gram equivalent of CaOH twice is 37 grams. Let's see example number 5 in basis. Equivalent weight of aluminium hydroxide. What is the formula for aluminium hydroxide? LOH thrice. Correct? So equivalent weight. What is the molecular weight? Molecular weight is
this is 16 plus 1 17, 17 3s are 51, 51 plus 27 is 78. This is the molecular weight. Upon number of replaceable OH minus signs is going to be 3, so that makes it 26. So equivalent weight of aluminum hydroxide is 26. That means 1 equivalent of aluminum hydroxide is 26. That means 1 gram equivalent of aluminum hydroxide is 26 grams. इक्विवेलेंट वेट के सेगमेंट में तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स. इसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से E is atomic weight of the element upon the valency. For example, number 1, equivalent weight of oxygen should be atomic weight is 16 and the valency is 2. So the equivalent weight of oxygen is 8. So what is 1 equivalent of oxygen? 8. What is 1 gram equivalent of oxygen? It is 8 grams. Secondly, let's say equivalent weight of hydrogen. Atomic weight is 1, valency is 1, so it is 1. So what is 1 gram equivalent of hydrogen? It is 1 gram. Third thing, let's say equivalent weight of chlorine. Atomic weight is 35.5, valency is 1, so this is 35.5. So 1 gram equivalent of Cl2 is 35.5 grams. Let's say we have equivalent weight of aluminium. The atomic weight is 27, valency is 3, so this is going to be 9. Let's say equivalent weight of magnesium. Atomic weight is 24, valency is 2, so this is 12. We have equivalent weight of, let's say, copper in the form of cupric ion. Okay, Cu plus 2, because we have Cu plus and Cu plus 2. I am taking Cu plus 2, so the valency is 2 and atomic weight is 63.5. Right, so this is somewhere around 31.75. So this everything is for to calculate the equivalent weight of elements, that is atomic weight upon valency. Okay, equivalent weight के सेगमेंट में हमने अब तक क्या क्या देखा? एसिड्स, बेस देखा, एलिमेंट्स देखा. नाउ चौथे नंबर पे देखते हैं सॉल्ट्स. इसका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या आता है? इट इज molecular weight of the salt upon the total charge on cation or anion. ये मैं आपको समझाता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव कैल्शियम फॉस्फेट. What is the formula? It is Ca3PO4 twice. In its aqueous solution, it will dissociate as Ca plus 2 and PO4 minus 3. Correct? और इसको बैलेंस करते हैं. It should be 3 times and it should be 2 times ऐसे. So here equivalent mass कैसे निकालेंगे? पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं. तो कैल्शियम इज 40 into 3 मतलब 120 हो गया. फिर 16 4 64, 64 plus 31 should be 95, है ना. 95 का डबल 2 times ये ऐसे ऐड होगा. ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. 310 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना. मैंने सिर्फ एटॉमिक मासेस से निकाला है अपॉन द टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन. अब कैल्शियम पे चार्ज क्या है? +2, लेकिन 3 पे होगा 3 into +2, सो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज इज टोटल चार्ज. यहाँ पे +6. वैसे यहाँ पे एक फॉस्फेट पे -3, लेकिन 2 पे कितना आएगा? -6. ऐसे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज 2 into -3. तो +6 लेना है क्योंकि -6 सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने का 6 ऐसे, क्योंकि ये हमेशा इक्वल ही होता है. ये जो नंबर है वो सिर्फ लेने का, साइन नहीं लेना है. सो दिस यू कैन नाउ कैलकुलेट.
समवेयर अराउंड 51 आएगा, ऐसे आएगा, करेक्ट। तो दिस इज सपोज टू बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के लिए पहले उसका डिसोसिएशन लिखते हैं, बैलेंस करते हैं, फिर टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, दोनों सेम ही आना चाहिए, नहीं आया मतलब आपका ये बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन और लिखा है, और टोटल चार्ज है, सिर्फ चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल टू फाइंड आउट equivalent weight of a salt, let's say calcium carbonate, famously called as limestone. What is the formula of calcium carbonate? CaCO3. How it will dissociate? The cation is Ca plus 2 and anion is CO3 minus 2. So the total charge here is plus 2 and negative charge is minus 2. Right? Coefficient is 1. So what will be the equivalent weight? The molecular weight of this is 100. Correct? O3 means 16 3s are 48 plus 12 is 60. 60 plus 40. Right? Makes it 100 upon 2. So this is 50. So 1 gram equivalent of CaCO3 is 50 grams. Example number 3. Let's take, we have aluminium sulphate. What is the formula? It is Al2SO4 thrice. How it will dissociate? What is the charge on aluminium? It is plus 3. And that of sulphate is minus 2. How many times aluminium is there? Twice. Sulphate is present 3 times. So the total charge again is coefficient multiplied by charge is plus 6. And this is charge on anion is minus 6, 3 into minus 2, right? Now equivalent mass, the molecular weight will be 342. कैसे? atomic mass add करना है. What is the atomic weight of aluminium? 27. तो 27 2s are 54 हो जाएगा. Sulfur is 32. O4 मतलब 64. 64 plus 32 is 96. 96 3s are 288. So this is going to be 4, 3. Yes, it is 342 upon total charge on cation and anion is 6. So this you can divide and get the answer. Oh, 57. So one equivalent of aluminium sulphate is 57. 1 gram equivalent of aluminium sulphate is 57 grams. That's it. Number 4 in salts, let's say sodium chloride. ये फेमस है कॉमन सॉल्ट, हम लोग खाने में जो नमक यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला है NaCl in its aqueous solution. How it will dissociate? Na plus and Cl minus. So what is the total charge on cation? It is plus 1 and anion is minus 1. What will be the equivalent weight? The molecular weight. Sodium is 23, chlorine is 35.5. So 23 is the atomic mass of sodium, chlorine is 35.5, you get 58.5. This is the molecular weight, 58.5 upon total charge on cation or anion is 1. So it is 58.5. So what is the equivalent weight of NaCl? 58.5. What is 1 equivalent of NaCl? 58.5. What is 1 gram equivalent of NaCl? 58.5 grams. Equivalent weight के सेगमेंट पे 5वें नंबर पे देखते हैं equivalent weight of oxidizing agent और reducing agent. Oxidizing या reducing agent. पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है ना, इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन
and it helps in oxidation. Easy to remember. दूसरे का ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है. हेल्प्स इन, इधर ओ आता है, इधर ओ, मतलब खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है. तो रिड्यूसिंग एजेंट एग्जैक्टली उल्टा करेगा. क्या करेगा, itself undergoes what, oxidation, right, and helps some other element or forces some other elements to undergo what, reduction. है ना, ये समझना चाहिए. इधर आ रहे तो हेल्प्स के बाद इधर आ रहता है. मतलब क्या, सपोज ऐसा है, ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो ऐसा है Al to Al+3. अब इसके सिर पे यहाँ पे नंबर +3, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0 है. 0 का +3 हो रहा है, मतलब नंबर बढ़ रहा है. बढ़ रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. तो ये खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना. इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब किसी दूसरे का रिडक्शन करेगा. इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज सपोज टू बी, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट. तो उल्टा रहेगा. सपोज ये है Ca+2 का Ca हो रहा है, मतलब सिर पे नंबर है वो कम हो रहा है. इसके सिर पे नंबर नहीं, मतलब 0 है ना, +2 का 0 मतलब नंबर कम हो गया. तो ये क्या हो गया, रिडक्शन. तो Ca+2 खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन. इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, मतलब हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन. तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपने नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन. इसके लिए तभी डिटेल में समझाऊंगा. अभी जो समझाया वो थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाया. तो एक एक्सेप्शनल एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एंट्रेंस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन एसिडिक मीडियम, देखो मीडियम चेंज होगा वैसे बिहेवियर चेंज होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. K-4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका बिहेवियर देख लेना क्या है. इसके अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है. ये कैसे आएगा वो आपको सिखाया जाएगा. फिलहाल सिर्फ इक्विवेलेंट मास देख लेते हैं. +7 वो चेंज हो जाता है, इट गेट्स चेंज्ड इनटू +2 ऐसे. तो +7 to +2 नंबर डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है मतलब ये श्योर शॉट रिडक्शन हो रहा है ना. और यहाँ पे रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है. तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का. मॉलिक्यूलर वेट, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट जो भी रहेगा m अपॉन डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट. ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसको कहते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. व्हाट इज द डिफरेंस, 7 - 2 मतलब 5 हो गया. समझा है ना. फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया, ये लिखवा के दिया है. इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो मैंने यहाँ पे लिखा अपॉन क्या, डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये फॉर्मूला है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये सिर पे जो चार्ज लिखा है उसमें डिफरेंस कितना है, 5. या तो कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा उतना ही आता है, वही इधर आया. तो अभी मीडियम चेंज कर देते हैं. इन न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, इसमें बिहेवियर क्या आएगा, KMnO4 का, है ना. यहाँ पे ये +7 है ना. आपको देगा Mn+4, ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. तो डिफरेंस कितने का आएगा, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इक्विवेलेंट मास शुड बी whatever is the molecular weight, है ना, अपॉन 3 आएगा. ये 3, 7 - 4 का. और लास्टली इन अ स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, अभी क्या आएगा रिएक्शन, द सेम KMnO4 having oxidation state as +7 is going to give you Mn+6, है ना. बेसिकली
ये ऐसे मिलता है मैंगनेट आयन MnO4-2 जिसमें Mn+6 है, ये देखना है आपको +6 समझता है। तो +7 to +6 कितना डिफरेंस हुआ 1 का, दिस इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 नहीं देखना है, Mn का चार्ज देखना है विच इज +6 राइट। तो +7 to +6 इसके लिए इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 है ना। तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। इजी है, आपको सिर्फ ये सीक्वेंस ऑफ मीडियम याद रखना है राइट। इफ यू सी एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम और स्ट्रांगली अल्कलाइन, रिएक्टेंट तो सेम है और प्रोडक्ट में ना चार्ज में 2 का टेबल आ रहा है, 2 1 जा 2 जा और 3 जा। ऐसे MnO4-2 याद नहीं रहा तो भी Mn+6 लिखा तो भी चलेगा करेक्ट। फिर डिफरेंस निकालेगा 7-2 यहाँ पे है 5, 7-4 is 3, 7-6 is 1, ऐसे इसका डिनोमिनेटर इज 1। So this is the best example as far as इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कंसर्न। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, वो मैं रेडॉक्स में आपको डिटेल में सिखा दूंगा। फिलहाल ये सेगमेंट सिर्फ इक्विवेलेंट मास के लिए हम लोग कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट के लिए। हाय स्टूडेंट्स, आज थोड़ा केमिस्ट्री के रिलेटेड स्टडीज कैसे करना चाहिए उसका थोड़ा इंटरेक्शन करता हूँ। आपने 10th अभी पास किया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और 11th के लिए अभी एडमिशन प्रोसीजर शुरू है, ऑनलाइन एक राउंड करके एडमिशन सिक्योर करेंगे। और जब साथ में इन वीडियोस का स्टडी कर रहे हैं तो साइंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री में मैं ले रहा हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने पहले यूनिट्स देखा था, कैटायंस एनायंस देखा था, वो आपने रोज लिखना है। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है कैटायंस एनायंस, उसको बाय हार्ट करना है। क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बनता है, वो दिखा है आपको। सारे यूनिट्स 6-7 क्वांटिटीज के इस सीरीज में मैंने सिखाए हैं, उसको रिवाइज करना चाहिए, रोज लिखना चाहिए। वो अच्छे से होगा तो ही ये चैप्टर्स आपको समझेंगे। साइंस में चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, एक चैप्टर दूसरे से, एक का कंसेप्ट दूसरे में लगता है। जैसे अभी आज के सेगमेंट में हमने इक्विवेलेंट वेट देखा, वो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको आगे जाके 12th में लगेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की कहाँ कहाँ लगता है। लेकिन इस चैप्टर में भी रिडॉक्स का भी एक कंसेप्ट हमने देखा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो जो भी चीज है वो आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। जब आपको ऐसा इवन यू आर टोल्ड कि ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग स्किप करने वाले हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड तभी आएगा, है ना। तो दैट विल बी टॉट टू यू फॉर श्योर। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। किसी भी एक अच्छे इससे बुक में से एमसीक्यू सॉल्व करो। मैं कोई पर्टिकुलर बुक रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने खुद के नोट्स भी देता हूं और वो नोट्स में से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टाइम लगा के सॉल्व करना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। कि एक अलग से लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। उसमें टाइम इंपॉर्टेंट है। OMR शीट पे मार्किंग करके, मतलब एक्चुअली जैसे आपको आंसर शीट मिलता है उसके ऊपर मार्क करके ही सॉल्व करना चाहिए। रफ वर्क कैसे फास्ट करना चाहिए। मैं हमेशा टेबल्स बाय हार्ट करता हूँ, इसके लिए मेरा कैलकुलेशन फास्ट है। आज के लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एटॉमिक मासेस को जोड़ के मॉलिक्यूलर वेट निकाला। वो क्विकली ओरली हम लोग निकाल सकते हैं अगर आपके टेबल्स बाय हार्ट रहेंगे। एटॉमिक वेट और टेबल्स बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल पीपल टू लर्न द टेबल्स बाय हार्ट। आई नो यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड नाउ और आपको ऐसा लगाएगा कि अभी क्या टेबल्स बाय हार्ट करना, लेकिन इस उम्र में भी मैं भी अभी भी टेबल्स बाय हार्ट करता हूँ, है ना, बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो ऑल इन ऑल साइंस की प्रैक्टिस के लिए आपको साइंस की पढ़ाई के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है। एमसीक्यूज में जो भी डाउट्स रहेगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो आपका क्वेश्चन लिख के डाल सकते हैं, है ना। या तो उस जिस किसी भी बुक में से वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन का पिक्चर मार्क करके उसका भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं तुरंत आपको उसका आंसर दे दूंगा। और टच में रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। एक लाइक तो बनता है श्योरली। और डोंट फॉरगेट to subscribe my YouTube channel. Thank you.